हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एसके लाइफस्टाइल। तो आज हम ड्राइव पे जा रहे हैं एंड देन हम थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे, नथिंग मच, एंड देन विल टेक यू गाइस अलोंग। बाय। ओके गाइस, तो अभी हम ड्राइव पे निकल चुके हैं एंड टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट सम थिंग्स कि जो हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी बिफोर मूविंग टू गोल्ड कोस्ट। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन विल बी, व्हाट वाज द फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ गोल्ड कोस्ट व्हेन यू केम हियर? पहला इम्प्रेशन जब फरवरी में आए थे was really fun. It was fun, like lots happening for us because obviously हम काम नहीं करते थे. We were just here for holiday, so it was really fun. Lots of activities, lot of things to do day by day. लेकिन moving here and just living day to day life, going to work, वो सब, you can see कि कितना different है Melbourne से in terms of इधर इतना relaxed है, इतना calm है, slow है. There's not a lot going on, whereas Melbourne में constantly सब busy लगते हैं उधर. Everyone is so busy. Like there's something going on in Melbourne कि कुछ ना कुछ तो होता ही रहता था every weekend, every like even weekdays पे. But यहाँ पे it's more relaxed कि like बहुत काम है. Even ये tourist place है, but it feel like बहुत ऐसे काम है. Yeah, like सब शांत है. Everyone's just relaxing, enjoying ऐसे ही निकले चलने के लिए by the beach, all that kind of stuff. Whereas in Melbourne, you'd constantly see people rushing, speed walking, कुछ ना कुछ दिमाग पे चलता ही रहता है. But over here, it's like, who cares क्या हो रहा है दुनिया में, हम इधर enjoy कर रहे हैं. It's the most weird and different feeling, but it's not bad. It's not good, it's just different. Okay, now second thing was moving out and setting up our home, our apartment. That was a new experience for me कि मैंने कभी भी like बिल्कुल ऐसे छोटी से छोटी चीज़ नहीं ली है in my life, क्योंकि सब कुछ मिलता था. Like you know कि कहीं भी मैं गई हूँ, कहीं भी मैं मूव इन हुई हूँ, there is something like होता ही था वहाँ पे. even every single thing यहाँ पे तो like even plates लिए and even spices, मसाले and all that stuff. It was so difficult for me because एक पॉइंट पे ऐसे हो गया था कि कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से, like it was so messed up. The best advice I can give is if you feel overwhelmed कि कहाँ से शुरू करूँ, क्या लेना है, क्या necessities है. हमारा सबसे बड़ा question यही था कि what's essential and what do we don't need right now. लेकिन biggest advice, everything is essential. सब कुछ essential. Every single fucking thing is essential. We're gonna like, कुछ भी आप करोगे ना, you're gonna realize कि यार shit, ये तो मेरे पास है ही नहीं. Go back in the car, back out to Big W, Coles, जहाँ पे जाना हो, and you gotta go buy it again, right? Best thing we did was play that game in Big W, because एक बार वो game खेल ली हमने. We walked through every aisle and realized, oh, we need this as well. Oh, ये भी चाहिए. Oh, ये भी चाहिए. Oh my God. अब finally जाके सेट हो. मैडम डिस्ट्रैक्ट हो गई सनसेट देख के. दिखा दो इनको भी सनसेट, इतना प्यारा है. That is such a nice place. हम यहाँ पे कभी नहीं आए हैं. Oh my God. That's all the beach, guys. मतलब यहाँ पे कहीं चले जाओ आपको बीच ही दिखेगा. It's such a nice place. And but so another thing जो मुझे सरप्राइज करती है वो है यहाँ की हॉस्पिटैलिटी. जो हम 10 दिन से like बाहर खाना खा रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी इज़ अमेजिंग. पीपल आर so friendly as compared to Melbourne. मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं बस कसम से मतलब सब कुछ दे आऊँ उन्हें, लाइक सब कुछ उन पे जो छावर कर दूँ. लाइक दे आर सो फ्रेंडली. लाइक आई नो कि इट्स देयर जॉब, but they are so sweet. Because Gold Coast is so heavily tourists, right? Tourism है इधर, तो word of mouth, referral, reviews, ये सब बहुत important है उनके लिए in their businesses, like restaurants हो, fast food हो, छोटा सा cafe हो, जो भी हो. It's very, very important to them. So जहाँ भी जाएं, anywhere that we've gone is been amazing hospitality. चाहे उस जगह का खाना इतना अच्छा ना हो, लेकिन जो staff होते हैं, they make the experience so good that you don't even think about how the food's tasting.
I know, like सुबह अगर मैं कैफे चली जाऊँ, it will make my day because that the way they treat like all the people, so उसकी वजह से मेरा दिन बन जाता है. Yeah, they've all got like very bright smiles. They greet you very nicely. Hey, hello, how are you? How was your day? Anybody see smile के साथ, and they're so helpful. Like कुछ छोटा सा inconvenience हो, या if you request a special something in an order, you won't get the response that you typically get in Melbourne. No, we don't do that, or sorry, we don't do that, so we can't do that. They will say they might not be able to do it, but they'll say it nicer. Like Yeah. वो ऐसे समझाएंगे कि हम ट्राई कर सकते हैं, ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये कर. They'll try and go above and beyond for you. वो आपको दिखता है कि like they're really really trying. And how's the weather and traffic here? Traffic is amazing here. Melbourne में it used to take 45 minutes to over an hour to get to work, right? Like इतने दूर, चलो दूर तो थे ही काम से, but still it was ridiculous. Like the traffic was ridiculous. इधर तो 5-10 मिनट में काम पे पहुंच जाता हूँ. It's the best feeling. Yeah, like maximum like 10 minutes rush in the hour- traffic. Rush hour का मतलब रास्ते पे 4 cars हैं. You know that's their rush hour. There's no actual blockage. If there's a car crash or something, it's a different story. But I mean, regular, just day to day, there's not that much traffic. It's so peaceful because you know you're not stressed about getting to work on time, or फिर वो traffic में बैठ के गुस्सा आ रहा है, या फिर घर जाना है after work. It's very calming. It's like a nice drive. It's almost like you relax on your way home, or you get ready for the day on the way to work. It's beautiful. Yeah. And weather is like 7:30 बजे. I wake up like every day maximum 7:30 a.m. even on like our day off. और मेलबर्न में मतलब मैं 10 बजे भी उठती थी, 11 बजे भी उठती थी. I used to wake up like very much tired, ऐसे थकी सी. इधर तो 7:30 बजे से सन निकल जाता है, बहुत एनर्जी आ जाती है. so energy, and ऐसे लगता है like सब कुछ bright है. And अभी वैसे तो it's winter here, but it doesn't feel like it's winter. लेकिन समर में पता चलेगा, समर में हमारी it's gonna be proper like. You can't say. Yeah, so I was saying कि weather is so nice. यहाँ पे सुबह ऐसे bright हो जाता है, and yeah, it's raining. I guess 2-3 days it was raining, but it's fine. और मेलबर्न में तो बहुत ठंड है इस टाइम पे. So weather change was, we didn't expect that much change as compared to Melbourne. In summer, I think we'll really realize. Like summer में proper, I think थोड़ा सा मुश्किल होगा because it'll be a lot hotter than what we're used to. Yeah. But the fact that the sun comes up so early and sets early as well, it's beautiful. Because सुबह time से उठ जाते हैं, ऐसे लगता है कि पूरा दिन है हमारे पास कुछ ना कुछ करने के लिए, और रात हो like 7 o'clock 8 o'clock होते ही sun चला जाता है, it becomes night time, and then you fall asleep naturally as well. It's very different. It's very good. And because of that, मैं gym जाने लगी हूँ, guys. Wow. Gym. Biggest achievement. Gym जाने, चाहे वहाँ पे मैं 10 मिनट चल के आ जाती हूँ treadmill पे, but Still went to the gym. I went to the gym. And then फिर उसके बाद चाहे I get small caramel cappuccino with extra sugar. So what? मैं बोलती हूँ कभी आपको whatever. Yeah, so यही changes थे, nothing much because we are in the same country, तो इतना कुछ नहीं लगा. बस major था कि जब move होते हैं, like if you're coming just as a tourist, तो things different होती है, but when you are moving, it's like Much. it's like very much. So climate change, traffic, and then moving, settling in, and what was the other thing? क्या खरीदना है? That's the क्या biggest thing. खरीदना है? Yeah, like what the amount of money you're gonna spend on stuff you didn't realize. It's gonna be good, but it's all worth it if that's what you want to do. अब मैं हर किसी के बारे में नहीं बोल सकता, but for us, like, we're very happy. There's no regrets. Touch wood. It's all very very well. Yeah. So if you Touch want. wood. Okay. By the way, हम जा कहाँ पे रहे हैं? I want to get an iced coffee, and then we drive around for like as many hours as we can. Why? We gotta kill time until the next lockup का episode जब तक आए.
यार सुबह उठ Excuse के me. सीधा देख लिया लॉकअप का एपिसोड, अब कुछ देखने Oh my की god है guys, यार। मैं एक सीक्रेट बताना चाहती हूँ. This guy, he used to मत यूज करो, मेरी लाइफलाइन मत यूज करो। I'm gonna tell them a secret. Yeah. This guy used to hate lockup. कि क्या चेचे पेपी लड़ाई करते रहते हैं क्या, that's so much toxicity. And मैं देखती थी, ठीक है, उसके बाद बोलते थे कौन पसंद है, and then slowly आके now मुझसे ज़्यादा ये सर जी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं. And as I love Shreya, so he also loves Shreya. No, मेरा फेवरेट तो लैला है। Excuse me. आपका फेवरेट कौन है, हमें कमेंट में बताना। आप लॉकअप I want Shreya जो to नहीं win. देखते हो तो देखो, हमें हमें बुला लेना अगले लॉकअप में। मुझे भी खेलना है। किसके साथ लड़ना है आपको? हाँ, किसी के Just साथ don't नहीं। tell any किसी name, के- okay? किसी के साथ नहीं। Okay. हम जो साथ में जाएंगे तो मुश्किल हो Yeah, जाएगा। but आपके उस- सारे सीक्रेट्स तो मुझे पता है। Yeah, so जो मैं मुझे भी निकल- आपके सीक्रेट सारे पता है. जब मैं निकल जाऊंगा आपके सारे के सारे सीक्रेट्स एक्सपोज मैं भी एक्सपोज कर, मैं तो पहले ही करके जाऊंगी ताकि एंट्री ना मिले आपको. I was saying, wait, it's only 5:13 and उसके लिए 6.5 घंटे पड़े हैं. तो I want to go home or I want to go have something to eat. I don't know. No, we will go home and आज पहली बार let's make food at home. No, I don't want to eat food at home. सही बात है, चलो फिर let's go eat something. Last 2 days I'm making food at home. Like chai. Nice, good one. Good job. Good job. That's it guys. Let us leave now and you enjoy. Okay? Have a good day or good night. Bye bye. Say bye bye. Bye. Bye.